One day, my husband came and suddenly he told me that this relationship is not going to work out anymore. This marriage is not going to work out anymore, and we have to end this relationship. He cannot continue like this. Uh, it was not like talking talking to me or discussing with me. It was like kind of he broke the news to me that he's not going to continue and he's going to file for a divorce. I knew we had lot of issues between us, and I knew we were working out on those issues, but I didn't see this coming because things were getting improved between us, and things got improved a lot in last 6 months, and I was kind of hopeful that this relationship will work out and this will not end like this abruptly. But when he came and he told me, it was a complete shocker for me. I mean, I didn't understand what to say or how to react on his sudden decision or sudden change in behavior. I was clueless, and I was trying to understand that why, what, when, how. I mean, I was trying to get so many answers that how did this happen? What is there which I don't know, or what he is not telling me. That point of time, Shivani helped me a lot. She guided me on how to handle the situation, how to find out the reasons by talking to him, by checking out his behavior patterns, which I didn't notice in last 6 months. So, I mean, it was like psychologically how to handle things, how to bring it to a closure if it's not working out. Shivani was the one who got me through it. If she wouldn't have been there, I didn't I I would have never got to know about the reasons for this, why it happened and how it happened. And she was the one finally who told me one day that this is a reality check for you, and now you have to come out of this and you have to end this relationship. This is not going to work out anymore. That day I realized that okay, fine, I have to end this up. उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक थेरेपिस्ट या मैरिज काउंसलर का जॉब सिर्फ़ और सिर्फ रिश्ते चलाना नहीं है. इट्स लाइक अगर रिश्ते नहीं चल रहे हैं, अगर वो वर्कआउट नहीं हो सकते हैं, तो उनको सही पॉइंट पे एंड करना या करवाना, सो दैट आइदर ऑफ द पार्टनर्स को इमोशनली और मेंटल ट्रॉमा या टॉर्चर से ना गुज़रना पड़े. उस चीज़ का ध्यान भी थेरेपिस्ट रखता है. या आई कुड से कि शिवानी ने वो चीज़ों का ध्यान रखा. शी हेल्प मी आउट अ लॉट, लाइक एक इमोशनल और मेंटल क्लोजर देने के लिए कि अच्छा अब चीज़ें नहीं चलेंगी, अब चीज़ें इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, आई हैव टू एंड दिस अप. अगर अगर शिवानी नहीं होती तो इट वुड बी लाइक मैं शायद अपनी ही एक गिल्ट ट्रिप पे होती कि मेरा सर्टेन बिहेवियर या मेरा सर्टेन पैटर्न, उसकी वजह से रिलेशनशिप एंड हो गया, मेरी गलतियां हैं. मैं अपना फॉल्ट्स ढूंढती रहती कि व्हाट कुड आई हैव डन बेटर, कि मैं क्या कर सकती थी कि ये रिलेशनशिप चलता. बट बिकॉज शिवानी वॉज देयर, आई वॉज एबल टू फाइंड आउट कि नहीं, इट वॉज़ नॉट माई फॉल्ट कम्प्लीटली. इट अगर एक शादी चलानी है तो उस शादी में दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, दोनों पार्टनर्स का. एंड इफ़ वन ऑफ देम इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग, तो वो किसी हाल में वो रिलेशनशिप नहीं चल सकता है. तो इट्स लाइक आई गॉट अ मेंटल पीस उस दिन, जिस दिन वी रियलाइज दैट अच्छा ओके, these are the reasons and this is not going to work out because he don't want to work it out. That day, I still remember Shivani told that this is a reality check for you. You have to get out of this relationship now.
मतलब इट्स लाइक शिवानी ने सिर्फ वही हेल्प नहीं किया, शिवानी और उसकी टीम ने आगे भी मुझे इमोशनली उस चीज़ से बाहर निकलने में बहुत हेल्प किया. लाइक everything, everything. If in case if I am getting divorce also, then how should I continue, what should I say, I mean getting the right kind of lawyer for me, that also Shivani helped me out. I mean Shivani went out of her way to help me out. I don't know if any other therapist will do that. Like आज भी if we talk, I talk to Shivani, it's like now we talk more like friends, not like a therapist and a client. She still takes my sessions, like how I'm coping through this all this separation and divorce drama. So, and she helps me out to find out the distractions and other techniques, like अभी मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए. It's like it's a very big support. I mean, I didn't expect कि if I'm going to someone for some professional help, then that person or that team will go out of their way to help me out. I mean it's very overwhelming. जो इमोशनल सपोर्ट जो मुझे फैमिली और फ्रेंड से मिलता है, सेम इमोशनल सपोर्ट, सेम सेम व्हाट यू विल से, एक मोटिवेशन फैक्टर, मोटिवेशन वो मुझे शिवानी और उसकी टीम से मिलता है. मतलब अगर शिवानी और उसकी टीम नहीं होती तो आई डोंट नो हाउ वुड आई हैव बीन कोपिंग विद द सिचुएशन. मतलब इट्स लाइक इफ़ शिवानी इज़ देयर, इट्स लाइक सम काइंड ऑफ ब्लेसिंग फॉर मी. अगर यही चीज़ शिवानी के थेरेपी सेशंस के बिना हुई होती तो आई डोंट नो हाउ वुड आई हैव बीन हैंडलिंग दिस सिचुएशन. आई थिंक मतलब शायद मैं डिप्रेशन में होती, या मैं कहीं किसी कोने में बैठ के रो रही होती. आई मीन या दैट्स इट. आई मीन इट्स अ लेसन लर्न, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस तो था ही, लेकिन शिवानी और उनकी टीम के साथ it came as a learning experience. It's not like now I deal this situation as a bad phase of my life. I deal with the situation like it's a learning. It was a learning for me. It was a phase and it has passed through. So thank you Shivani, and thank you the complete team, Shivani's complete team.